Today I am going to first give some message in English. After that, the same message in Hindi. अच्छी तरह समझिए कि आज हम पहले अंग्रेजी में बताएंगे फिर हिंदी में. Try to understand. If Paramahansa Yogananda recognized Jnanata Samyukteswara his Guru, then he must be having the same standard of knowledge. Otherwise, we cannot recognize. Sometimes we try to live with the realized master in order to get peace and joy, but we don't recognize. We try to live with Lahiri Mahasaya, with Paramahansa Yogananda, with Yukteswara, or with Mahatma Babaji, with anyone. We will get a lot of peace and joy and comfort, and we like it. But it does not mean that we recognize them. Paramahansa Yogananda, he recognized Yukteswara. Therefore, he was able to follow him. Therefore, he was able to impart Kriyayoga meditation. All the disciples who were with Samyukteswara, they felt a lot of peace and joy and comfort. Therefore, they stayed. But nobody was able to recognize Jnanata Yukteswara, what is the height, what is his higher status. Therefore, when he resurrected in Sri Rampur, when Jnanata Yukteswara was in Calcutta, from there he resurrected in Sri Rampur, and who saw Paramahansa Yogananda? No other disciple were able to see him, because they were not in that height of self-realization. Paramahansa Yogananda was in the same height of self-realization as Samyukteswara was there. Therefore, when Samyukteswara resurrected in Bombay Regent Hotel, he was having no fear. He just tried to hold him tightly. Imagine that if anybody else, if you are loving your mother, your father, or your children, or your husband or wife, if after death, if they resurrect in the night, they will say, "Hello, how are you?" Without any doubt, that person will run away. That ghost has come. What is the meaning of the ghost? Somebody departed, is not physical body, who is able to resurrect, he is able to listen and see from that astral world. If that great person is able to resurrect and is able to talk and discuss, that is called conversation with the ghost. When Samyukteswara resurrected, Paramahansa Yogananda felt eternal joy, and he saw that resurrected stage because he was one with Yukteswara. That is the important point. Therefore, we should follow Paramahansa Yogananda with 100% devotion. His love of Yogananda is infinite, but he never demonstrated that love in the form of any miracle. He helped all silently, astrally, through his causal body, astral body. He helped a lot, millions. But he never decided to resurrect as Yukteswara resurrected for Yogananda. Lahiri Mahasaya resurrected because Paramahansa Yogananda demonstrated eternal humbleness. He never demonstrated, I have such great power and knowledge
that he can resurrect. And the greatest example, when we follow Paramahansa Yogananda, then we'll have the same attitude, not to show off, not to demonstrate, oh, I am great, I am great, I am great. I can touch you, you will be healed. I am able to heal you. I am great because I am able to heal you. Paramahansa Yogananda never demonstrated this. If you follow him, you will achieve the same humbleness. You will help many, but you will not demonstrate. That's a very important point. Then what Paramahansa Yogananda said, follow Mahatma Gandhi. Then in the life of Mahatma Gandhi, Kasturba Mahatma Gandhi, they married in the teenage. Why it was young marriage? Because Mahatma Gandhi was prophet. He wanted to make Kasturba as disciple. Anybody learning this Kriyayoga science from very beginning, then they can learn better. Therefore, with the planning of Mahatma Babaji, Kasturba married Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi became her guru. In due course of time, wife of Mahatma Gandhi recognized, her name was Kasturba. She recognized the height of Mahatma Gandhi. She wrote a letter in the honor of Mahatma Gandhi. That letter is published in Autobiography of Yogi. That is very important to listen. What is the main subject today? Chapter 44, with Mahatma Gandhi at Vardha. That letter offered to Paramahansa Yogananda, what she wrote for Mahatma Gandhi. I am writing again only 2 lines. I thank you for having had the privilege of being your lifelong companion and helpmate. I thank you for the most perfect marriage in the world based on Brahmacharya, self-control, and not on this sex. What does it mean? When Mahatma Gandhi was talking about Brahmacharya, and he said sincerely about Brahmacharya that everybody should practice, should do the experiment about Brahmacharya. You are teaching how to follow Brahmacharya, but people misunderstanding. You are doing various experiments in his life. How to follow Brahmacharya. He taught the same principle to Manu and to many others. When he was teaching this, I am going to give a lesson in the Brahmacharya. People used to imagine that he is going to engage himself in sexual activities. But Kasturba is writing that my companion, lifelong companion and helpmate, she was explained about her that she is lifelong companion and helpmate to Mahatma Gandhi. Because marriage is based on Brahmacharya, not on the sex activity. What is the meaning of Brahmacharya? How works Brahma as never before? What was my face in the past life, in this life is different. The next life will be different. What your face was in the past life, in the present life, it is different. Working like Brahmacharya means working as never before, but each work is supreme
is excellent as never before. What you worked yesterday, the best never before. What you are working today, the best as never before. What you are going to work just after a moment, that will be as never before. That is called following Brahmacharya. Highest quality of work, each and every moment as never before. That lesson was given by Mahatma Gandhi to all disciples, to all people. But at present, on this planet, on this earth, life is based on the duality, attachment, aversion, birth and death, good and bad, virtues and sin, negative and positive. This life is based on the logic and power of mind and power of senses, all represent illusion, Maya. They never exist. Whose life is based on the logic, on the mental and sense perception, they cannot understand Gandhiji. Therefore, about Gandhiji means, Gandhiji Brahmacharya means work as never before. If you are working as never before, you are sitting as never before. You are opening your eyes, looking at various objects as never before. Using your ear to listen as never before. Using your nose and tongue to smell and taste as never before. Walking each and every step what you want today as never before. That is called practicing Brahmacharya. This experiment was performed by Mahatma Gandhi. And he taught this in majority. When Paramahansa Yogananda was teaching this in North America, great confusion came. He was teaching the same thing. And Paramahansa Yogananda program was suspended. Because people have misunderstanding. Oh, he is giving the lessons on the sexuality. How to transform sex perception into intelligence. People were not understanding. Therefore, our programs were suspended. You know how much demand of Yogananda's program? Whenever he announced for a program, the auditorium completely filled before, so that people should get their place, and extra chairs were put. At that time when program is cancelled, that is the worst thing. Why it was cancelled? Because Yogananda was teaching how to transform attachment, aversion on the platform of sense organ, hearing, touch, vision, taste, smell, into love of God. Try to understand it. Then what is knowledge given by Mahatma Gandhi? I am telling about one thing. First teaching is Bapu, my mother. Each and every person should live like mother. Bapu, there is Ba, B-A. Ba means nearest of near. If you have life partner, inseparable life partner, we say Ba. If you have your sister, inseparable sister, deepest relation into brother and sister, the sister will all the time love brother as the greatest friend. Then sister will say brother Ba and brother will say sister Ba. And Pa means to get. How you will get this knowledge? How will achieve this status? When there is a U means upper. When you practice and Kriyayoga, when the life force flowing in all over head to toe, it starts moving towards the Sushumna Dwar, towards Maharlo within, towards Brahmarand within, towards Trikuti within. Why the Brahmarand? Why the Trikuti? When try to open holy signs,
and you will realize, you will see. Just open this chapter. Revelation, Sutta number 11. Maharloka, the place of magnet, is Brahmarand, is Dasam Dwar, is Trikuti. Then why the Maharloka? Open the page number. The first chapter, page number 28. This figure is within Sutra 7 to 10. See why the Maharloka. Chitta, ego, buddhi, manas. This is called Maharloka. Therefore, when you practice Kriyayoga sincerely, life force enters into Maharloka. It's called Sushumna Dwar. This is called Trikuti. This is called Brahmarand. After that, it will be ascending up. Then you will enter into the next. You will call you are son of God. Then you are Kutas Purushottam. Try to remember this sincerely. By practicing Kriyayoga more and more, the life force which is within, that life force is Ba, my nearest of near. And life force appreciates head to toes. Head to toes is Ba of life force. If two husband and wife live for each other, decided to live forever, then both are Ba of each other. How to achieve this state? Pa means Pana, to get it. When you practice Kriyayoga meditation, when this life force starts ascending towards Maharlok, Sushumna Dwar, Trikuti, Brahmarand, and you will get a power how to ascend further to realize we are children of God. In that stage, you can celebrate the status of Ba for each other. That is the important point. You should remember it. Therefore, people do not understand what is Brahmacharya and they criticize Gandhiji. They criticize Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, he was having infatuation with the girls, therefore, after crucifixion and body was taken down, all females were present. Such a horrible condition. I request all of you, practice Kriyayoga sincerely and try to understand nothing. Practice Kriyayoga sincerely and try to serve and serve and serve. अच्छी तरह से याद रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें बताना कि हम किसी को तभी समझ पाएंगे जो उसके स्टेटस में आएंगे। जब तक उसके स्टेटस में नहीं आएंगे समझ नहीं पाएंगे। अगर आप प्रॉफिट रियलाइज मास्टर को समझ सकते हैं तो आप उस स्टेटस में होंगे। अगर स्टेटस में नहीं है तब भी अगर रियलाइज मास्टर कोई है तो उसके इर्द गिर्द रहने का अर्थ ये नहीं कि आप उसको समझते हैं। उसके छाया में शांति मिलती है, उसके छाया में ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है, निर्भयता मिलती है। तो हर आदमी रियलाइज मास्टर के चारों तरफ रहना पसंद करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसको समझता है। वो स्वामी गिरी के साथ कितने लोग थे, इनको समझने वाले केवल परमहंस योगानंद थे। इसे परमहंस योगानंद इसलिए समझते थे कि उनकी हाइट, उनका स्टेटस एक गिरी से स्पर्श करता था। दोनों का जो वैल्यू, जो स्टेटस, जो स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग समान थी। इससे परमहंस योगानंद रिकॉग्नाइज की गिरी, एक रिकॉग्नाइज की परमहंस योगानंद। लेकिन गिरी के साथ और अनेक लोग थे। वो क्यों लोग थे? क्योंकि उनको शांति मिलती थी, उनको छाया मिलता था, उनको शक्ति मिलती थी, उनको ज्ञान मिलता था। लेकिन एक गिरी को समझ नहीं पाते थे। इसलिए याद रखिएगा, एक गिरी कोई समझा है परमहंस योगानंद। इसलिए महात्मा बाबा परमहंस योगानंद को पश्चिम में भेजा
देखिए परमहंस योगानंद की स्टेटस कलकत्ता में थे, 31 गिरी रिसरेक्ट हुई, प्रकट हुई श्री रामपुर में। कौन देखा? परमहंस योगानंद और शिष्य लोग और नहीं देख पाए। वो तो सबके सामने रिसरेक्ट हुए थे, लेकिन केवल देख पाए परमहंस योगानंद। जब 31वें गिरी की समाधि पुरी में दी गई, उसके 3 महीने के बाद 31वें गिरी फिर प्रकट होते हैं। इस बार योगानंद को अखबार में बांध लिए, उनको आलिंगन कर लिए, छोड़ नहीं रहे थे। केवल ये नहीं कि इनके सामने ही आए होंगे, परमहंस योगानंद को देख लिए क्योंकि उन्हीं के हाइट में थे। इस तरह से याद रखिए, स्वामी 31वें गिरी को समझने वाला केवल एक महान आत्मा परमहंस योगानंद, बाकी नहीं समझ सके। लाड़ी महाशय को स्वामी 31वें गिरी समझ सके थे। महातार बाबा को लाड़ी महाशय समझते थे। दोनों एक दूसरे में समझने की सामर्थ्य थी। अब देखिए महात्मा गांधी, ये परमहंस योगानंद ने कहा कि महात्मा गांधी को फॉलो करिए, तो महात्मा गांधी को कैसे फॉलो करें? महात्मा गांधी की क्या शिक्षा थी? महात्मा गांधी के बारे में जो कस्तूरबा ने बताया, उनके बारे में जो मनु ने बताया, उनके बारे में जो परमहंस योगानंद योगी कथामृत के 44 नंबर चैप्टर में लिखा। महात्मा गांधी अपने बारे में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी। हाँ, उन्होंने ब्रह्मचर्य का प्रयोग लिखा है अपनी आत्मकथा में। तो ब्रह्मचर्य का प्रयोग किस तरह का है, आइए हम आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाते हैं। जब परमहंस योगानंद स्वामी 31वें गिरी के निर्देश पर पहले महात्मा गांधी से मिलने गए, उनको दीक्षा दिए, फिर आए गुरुदेव से मिलने के लिए। जब महात्मा गांधी से मिलने गए तो सबसे निकट कस्तूरबा थी महात्मा गांधी की। कस्तूरबा महात्मा गांधी के ऑनर में, रिस्पेक्ट में एक पत्र लिखा था। इस पत्र को कस्तूरबा ने परमहंस योगानंद को दिया। उस पत्र के देखिए 2 लाइन हम पढ़ के सुनाते हैं। मैं आपकी आभारी हूं कि आपके जीवन संगिनी एवं सहधर्मिणी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपकी आभारी हूं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ विवाह बंधन के लिए जो विषय भोग पर नहीं है बल्कि ब्रह्मचर्य पर आधारित है। कस्तूरबा कहती है उनका संबंध महात्मा गांधी से ब्रह्मचर्य पर आधारित था। बाकी लोग क्या सोचते हैं? जब महात्मा गांधी कहते थे ब्रह्मचर्य का प्रयोग, बाकी लोग क्या समझते हैं? उनकी जितनी समझ है, लोगों की समझ है कि महात्मा गांधी सभी महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन करके ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते थे। कितनी गलत धारणा है ये। ब्रह्मचर्य का सीधा शर्त है ब्रह्म की तरह आचरण करना। ब्रह्मा का आचरण क्या है? जो चेहरा हमारा पिछले जन्म में था, इस जन्म वो नहीं है, एक अलग है। उसके पिछले जन्म में जो था, तो पिछले जन्म में अलग हुआ। जो आपका चेहरा इस जन्म में है, पिछले जन्म से अलग है। तो ब्रह्मा का काम क्या है? प्रतिपल ऐसा कर्म करना ऐसा कभी ना हुआ हो, और प्रत्येक कर्म की महिमा अनंत और असीम। इस जन्म में जो भी चेहरा हमारा है, जो ब्रह्मा ने बनाया, पिछले जन्म के चेहरे से अलग है। कि पिछले जन्म का भी चेहरा वो भी महान, इस जन्म का चेहरा भी महान। आपका जो पिछले जन्म में चेहरा था वो भी बहुत अच्छा, इस जन्म में भी बहुत अच्छा। तो प्रतिपल हम ऐसा काम करें, ऐसा कभी हुआ ना हो, मेरे द्वारा इतना अच्छा हुआ ना हो। प्रत्येक कर्म का संपादन ऐसा हो जो श्रेष्ठतम हो, महानतम हो। श्रेष्ठतम महानतम कौन सा होगा? जिस कर्म से हम योग की अवस्था में जाएं, हमारी दूरी खत्म हो,
समय और दूरी पर विजय हो। इसका मतलब आलस्य विहीन हो। प्रत्येक कर्म जो हमें आलस्य विहीनता की तरफ ले चलता है, उसी कर्म को ब्रह्मचर्य का कर्म कहते हैं। ब्रह्म की तरह आचरण है। हम कान से सुनते हैं, ऐसा सुने कि और अधिक एकता हो। किससे? मुझसे और आपसे, मुझसे और सभी से, मुझसे और भगवान से। हम ऐसा देखें, हमारे आपके बीच में और एकता हो, हमारे और भगवान के बीच, हमारे और परब्रह्म के बीच एकता बढ़ती जाए। हम ऐसा गंध लें, हम ऐसा स्वाद लें, हम ऐसा चलें, हम ऐसा काम करें कि एकता बढ़ती जाए। इसी को कहते हैं ब्रह्मचर्य का प्रयोग। हम प्रयोग करें, कैसे सुने, कैसे देखें, कैसे स्वाद लें, कैसे गंध लें, कैसे चलें, कैसे काम करें कि अद्वितीय हो। महात्मा गांधी ये शिक्षा देते थे। लेकिन चूंकि पृथ्वी है, पातालोक है, यहाँ द्वंद्व का माहौल है। कोई भी चीज हम सोचेंगे तो उसका विपरीत है, वो भी ढूंढते हैं। उसका अपोजिट क्या है? अपोजिट क्यों ढूंढते हैं? कहते दिन है तो इसका अपोजिट रात है, ऐसा नहीं है। दिन का अपोजिट रात नहीं है। हम ही देखते हैं, पाप है तो पुण्य होगा, जन्म है तो मृत्यु होगा, ऐसा नहीं है। एक चीज है, दो चीज नहीं है। चूंकि पृथ्वी पर एक द्वंदात्मक भाषा है। हमने कोई चीज खोजा जिसको कहते कण, अणुपरमाणु कहते हैं, उसको और खोजा तो उसमें कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक ऋण एक धन है। ये सही नहीं है। एटम के अंदर धन ऋण नहीं है, एक ही सिंबल है। इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, फिर आपको बताएंगे। क्योंकि पृथ्वी का वातावरण ही द्वंदात्मक वातावरण है, इसलिए कोई भी आदमी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता है। सोचना भी चाहेगा तो नहीं सोच पाएगा। याद रखिए, सिर से लेकर पैर की उंगली तक जो भी है, इसके बारे में सही नहीं सोच पाएंगे। इसकी अनुभूति को सुख कहें या दुख, इसकी अनुभूति है ज्ञान तत्व, शक्ति तत्व, शांति तत्व, आनंद तत्व, अमर तत्व है। ये नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है कि सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव करते हैं, ये सुख है या दुख है। क्योंकि पृथ्वी लोक की है, इसमें द्वंद्व की भाषा ही है। इसे याद रखिए। कोई आपको धोखा न दे, ये असंभव है। कोई धोखा क्यों नहीं देगा? जो आप जिस प्रकार हैं उस प्रकार ही हम आपको एक्सेप्ट कर ले। आप चाहे जो भी हो, जैसे भारत में रिवाज है, पति पत्नी एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हो। माँ बच्चे को एक्सेप्ट करती, बच्चा करे या ना करे, एक रिवाज है। ऐसे हम एक संकल्प ने, आप जैसे भी होंगे हम आपसे जुड़े रहेंगे। इसके अलावा केवल वही एक दूसरे के साथ रहेगा जो परम ज्ञानी है, बाकी नहीं रह सकते। और आपकी पत्नी अगर माँ की तरह नहीं है तो आज नहीं कल धोखा देगी। माँ तो धोखा नहीं देती। और आपका भाई, आपका पिता, आपका मित्र अगर माँ की तरह है तो धोखा नहीं होगा, नहीं तो धोखा अवश्य देंगे। हर आदमी धोखा देता सामान्य है, इससे नाराज मत होइए। हर आदमी आपको फंसाएगा, परेशान करेगा, ये सामान्य बात है, इससे नाराज मत होइए। हमें क्या करना है? क्रियायोग ध्यान करिए, सेवा करते जाइए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये आज ब्रीफ मैसेज है। आज और कल 2 दिन बहुत जरूरी काम में लगे हुए हैं, किसी और हम अधिक समय नहीं दे पाएंगे। हाँ, इमरजेंसी समय है, हम कभी भी दे सकते हैं। Now this is the brief message for today. Today and tomorrow I'm engaged in very important work. I may not be able to meet, but if any emergency there I'm available. Let us bow down to our devotion we have in Kriyayoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। अब बैठेंगे। Now we will sit, आंखें खोले, open eyes.